अच्छा ये आइडिया बढ़िया है, ये आइडिया बढ़िया। हाँ अच्छा ऐसा गैलरी बना चाहिए। एक फोटो निकालता हूँ बस। Sector globally. NMPB extends a warm welcome to all present here for this session. We all have gathered here to marshal the buyer-seller meet among farmers, FPOs, industries, and state UT governments to thresh out the challenges faced and way forwards in conjunction with discussion on medicinal plant. They are medicinal plants, cultivation, and supply chain management. Now, we may request to the Chief Executive Officer, National Medicinal Plant Board, Professor Tanuja Manoj Nesri, welcome today's chief guest, Shri Bhupender Yadav, Honorable Union Minister, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, honored with a medicinal plant and a bouquet for a token of gratitude. Ma'am, please. A big applause of this. Thank you, sir, for coming. Again, we request CEO ma'am to welcome Dr. Munjupara Mahendra Bhai Kalu Bhai, Honorable Minister of State, Ministry of Ayush and Ministry of Women and Child Development, honored with a medicinal plant and a bouquet for token of gratitude. Ma'am, please welcome Shri Lok Ranjanji, Secretary, Ministry of Donor, honored with a medicinal plant and a bouquet of flowers for a token of gratitude. Sir is IS officer, 1989 batch from Tripura cadre. Thank you, ma'am. In this series, I would like to invite Dr. Chandrasekhar Sanwal, Deputy CEO, National Medicinal Plant Board, to welcome Shri Bivas Ranjanji, ADG Wildlife, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, with a bouquet of flower and medicinal plants. Dr. Bivas is IFS officer 1989 batch from Uttar Pradesh cadre. We request sir again to welcome Mrs. Meenakshi Negi, additional PCCF of Karnataka. She is a wonderful lady and she is IFS officer 1989 batch Karnataka cadre. She is MPhil in policy and from Indian Institute of Policy, New Delhi. Sir, welcome Shri Jitendra Sharma ji, retired PCCF Punjab, who is a very dynamic personality. Mr. Jitendra Sharma is also a IFS officer, 1984 batch Punjab cadre. Former GS of Ayush and CO NMPB. He was awarded Rashtriya Gaurav Award by International Friendship Society in 2009. Now I request, तालियों के साथ सबका स्वागत कीजिए आप. Sir, I again request to you, please welcome UK Vats, General Manager EPIDA, with a medicinal plant and a bouquet of flower for a token of gratitude. Sir, please welcome to Dr. Satyanshu Kumar, Director DMA PR, with a medicinal plant and bouquet of flower for token of gratitude. Thank you, sir. Again, we request to Sir, Deputy CEO,
Welcome to Dr. Satyabrat Methi, former director DMAPR with Medicinal Plant. He is PhD in agriculture. He has developed 2 varieties and 3 hybrids of beetle wine, published 9 books. He served as a FAO international consultation in Afghanistan, Bhutan, China, and Egypt. Thank you, sir, for coming. May we request Mr. Saurabh Sharma, Manager Marketing and Trade. Welcome Dr. J.L.N. Shastri, former CEO NMPB and Managing Partner Jata Ayurved Healthcare, Kakinada, Andhra Pradesh. He is PhD in Ayurveda from Tilak Ayurveda Mahavidyalaya, Pune. Sir, please welcome to Shri Chandu Bhai Bhanushali, President EDMA. Thank you, Saurabh ji. We also welcome the CEOs of SMPBs and regional directors of RCFCs who are extended arms of National Medicinal Plant Board family throughout the country and directly involved in the event. We also welcome Acharya Balkrishna, MD Patanjali Haridwar, and Mrs. Vinita Srivastav, Advisor Health Ministry of Tribal Affairs, who have joined us virtually. Thank you. Thank you so much. Now we invite CEO NMPB, Professor Tanuja Manoj Nesri, to moderate the panel discussion. May we also invite Dr. Chandrasekhar Sanwal, Deputy CEO NMPB, and Saurabh Sharma, Manager Marketing and Trade, to join the panel discussion with CEO ma'am. Now I hand over the session to Chief Executive Officer, National Medicine Plant Board. Ma'am, please. Thank you. Namaskar. Am I audible? हेलो नमस्कार. आज के मुख्य अतिथि जिन्होंने हमारा उनके उपस्थिति में से ही उत्साहवर्धन किया, जिससे ये पता चलता है कि उनका मेडिसिनल प्लांट सेक्टर को वो बढ़ावा देना कितना चाहते हैं. हमारे मार्गदर्शक और माननीय मंत्री जी श्री भूपेंद्र यादव जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. हमारे अपने मंत्री जी डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई कालू भाई, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. आज का वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव the presence, physical presence of Sri Lokaranjan, Secretary, Ministry of Donor. Thank you, sir, for being with us. And all our esteemed panelists. It's a galaxy of the panelists, which including Mr. Bivas Ranjanji, Additional Director, Forest, DG of Forest, Ministry of Environment and Forest. Mr. U.K. Vadji, Vinita Srivastavji, Jitendra Sharmaji, who is our, we can say, guide, philosopher and friend, and Madam Minakshi Negiji, you have your PhD on medicinal plant, supply chain management and livelihood also. And Sri Satyanshu Kumar ji, Satyavat Maiti ji, Acharya Balkrishna ji, are all CEO of ex-CEOs J.L.N. Shastri ji, Sri Chandubhai Bhanushali ji, all the CEOs of State Medicinal Plant Board and Regional Facilitation Center from all 7 regions, sir. National Medicinal Plant Board is the headquarter. National Medicinal Plant Board is in Delhi, but our extended arms are Regional Facilitation Center, which represent from Northeast to Northern Eastern region, Himachal region, Western region, Southern region, and Eastern region, then Pan India. And all the state medicinal plant boards, including all the regions and UTs, all the farmers body, farmer representative, we have the industries with us, who will be the buyers, and the seller side will be the farmers, collectors, aggregators, traders, the industry bodies, and everyone, all the lovers of the medicinal plant board and all the stakeholders who are involved in the promotion of the medicinal plant sector across India and above internationally, as APEDA is also on board with. I'm really, this is the golden day in the history of NMPB, that for the first time, all the stakeholders, including forest and environment, including the tribal ministry, from the commerce,
from the agriculture and from the industry side, everyone is on the board. That itself means that it indicates that yesterday our Honorable Prime Minister in his inaugural speech mentioned that the medicinal plant is the future of building the economy of India. फार्मर्स की आय अगर दुगनी करनी है तो हमें इंट्रा क्रॉपिंग के लिए कुछ रिसर्च करना चाहिए. And I'm really happy, sir, to share that National Medicinal Plant Board has developed 104 agro techniques through ICAR and Agriculture Ministry and Horticulture Ministry. And today we are so lucky to have आज हमारी बायर और सेलर्स मीट है सर. और हमने हमारे रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर के तहत वेस्टर्न से भी है, ईस्टर्न से है, नॉर्थर्न से भी है और साउथ से भी है. तो हमने एक बायर्स और सेलर के एमओयू के लिए उनको एक बढ़ावा देने के लिए एक पहल रखी. और we are so happy that more than 50 MOUs have come forward from buyers and seller. आज तक एनएमपीबी के हिस्ट्री में, क्योंकि हमारे सभी सीईओ आज एनएमपीबी को जिन्होंने ये आरसीएफसी की पहल की, एनएमपीबी का फाउंडेशन किया और बढ़ावा दिया, दो सीईओज आर आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर पैनलिस्ट. बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट हम 25 एमओयू आज साइन करने जा रहे हैं. And we congratulate, we are really thankful, and this would have been not possible if our RCFCs and SMPBs have put their all efforts. So each and every RCFC has come out with minimum 5 MOUs. So at the end of this session, we will have, in your gracious presence, we will really sign all these 25 MOUs, and that would cover the value and volume, and from the forest, outside the forest, and also in the cultivation of the medicinal plant. So there are expert panelists. We would listen to their views, and in order to meet the timeline, maybe each panelist we request to give their expert views, because there are various challenges, issues, and how do we really bridge the gap in the supply chain management from collectors, aggregators in the forest, because sir, 85% of the raw material comes from the forest. And if we really make the ease of doing the business from the forest to the consumers, I think the sector would be really happy, and we are eager to listen from various good news from your side, how we really can support the medicinal plant growth in the country. So not wasting the time, but I'll just come to each panelist, and we maybe request to our esteemed experts to stick to timeline, and maybe you can brief us your views, and how do we bridge the gap, and how do we promote supply chain management within 4 to 5 minutes. So as Meenakshi Negi, the first question to Meenakshi Negi madam, because she is also looking after as additional PCCF in Karnataka, and Karnataka, she has developed the success story in promoting the medicinal plant sector in Karnataka. So madam, an estimated 85% of the medicinal plants in annual commercial demand is sourced from the wild. To strengthen the medicinal plant resource base in the country, NMPB has supported more than 1 lakh hectare area under conservation of medicinal plants through different state forest departments. Now, may we request you, Madam Negi, to enlighten us further that how can we strengthen the supply chain management of medicinal plants raw material source majorly through wild collection from the forest. We also request you, Madam, to kindly share your experiences from the state of Karnataka and any particular mechanism for best practices which can be implemented throughout India, because you have really developed a Karnataka model as a success model to promote medicinal plant. May we give big hand to Madam Meenakshi Negi. So, Adarniya Mantri ji, Sarkar Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Shri Yadav ji, CEO Campa, and the other dignitaries on the dais.
I'll not take too much time. Actually, I have 4 or 5 slides. I have many, but I'll stick to the time. I'll just show you 4 or 5 slides. The question that is asked of me is how to supply chain, what it is today and what it should be, right? So that is the question, and I will just go through the slides. Next. Next. So if you see the supply sources, where do we get the medicinal plants from? There are species that are found only in the wild. You cannot get them from anywhere else. Species that are found in the wild and also being cultivated. Then there are species that are not found in the wild, but are found only in cultivation. And there are species that are partly imported with some domestic production, and species that are completely imported, right? So this is the whole basket of the supply sources. So basically we have wild, we have cultivation, we have imports, but in different, the way it is put in front of you. And the supply chain for each one is different. I will stick to the wild because that's the question given to me. Next. So a normal supply chain, a very simplified supply chain looks like this. From the wild, you have collectors at the bottom of the chain, right up to industry at the top. And in between, you have various other players like government corporations. In some places, there are mandis, there are village forest committees, there are SHGs. But this is a supply chain which is a very simplified version. Sometimes the industry also purchases directly from the collectors, but it's very rare. Next. Next. So this is actually one study. In Karnataka, we had tried to understand. Ailanthus raisin, which many farmers and cultivators here will be knowing, is that raisin from the ailanthus tree. And this is the existing supply chain. As you can see, the writers, there is a person known as a writer. He's appointed by the contractor. He is in direct touch with the people who collect at the grassroots. Now, these tappers and collectors are the poorest of the poor lot. They live on the forest fringes. They collect and give the entire produce to the village collection agents. Every village, there is a collection agent. The writer then is in touch with the village collection agent, goes to the contractor, and from there it goes to the markets. This is what is existing today. What I am suggesting is an alternate value chain would be tappers and collectors, give it directly to the village forest committee, now every village will have a village forest committee. Now, every village forest committee cannot possibly market its produce. They can be, which actually there is a mechanism, sir, MOEF के तहत में ये mechanism है, जिसमें कि VFCs है, and they are all federated at the district level. So there is a federation known as the Forest Development Agency. वो अगर ये सारा market collect करके और एक centralized FDA हो, वहाँ से markets में चला जाए, तो it will be a much easier and much cleaner and a much transparent chain, rather than what it is at present, which is very opaque, and many of my industry friends will agree that they find it very difficult to access material which is coming from the wild. This is a study which I have done, sir, and I found that easiest chain would be that, and it's very much doable. क्योंकि ये सब exist करते हैं, VFCs भी हैं, FDA भी है, markets भी है, हमें clear chain hai. Tappers and collectors at the ground level will get a much better return from this. So this is one suggestion. जो मेरे को question पूछा गया था कि क्या किया जा सकता है, एक ये किया जा सकता है. Next. So this is a very one. And who is a writer? Now, if you look at why government cannot do it and why the contractor can do it, because उनका एक ये writer कर्नाटका में उसको writer बोलते हैं. He is a very prominent stakeholder, as you can see. He is appointed by the contractor on commission basis, sometimes on salary. He is in touch with all the tappers, collectors. वो lean season में क्या करता है, sir? I'm sure some of the traders would be knowing all this. वो lean season में इन tappers और collectors को एक fund, मतलब he provides money. So they are beholden to him. Government का क्या है कि we cannot give advance money to tappers and collectors. हम तो क्या करेंगे, जब वो tapping collecting कर लेंगे, हमारे पास आएंगे, तब हम तोलेंगे, देखेंगे, तो उसको पैसा देंगे. तो उसमें naturally the collector would rather go to the writer, in this case the contractor. So the writer, what does he do? On the one hand, he is in touch with the tappers and the collectors. On the other hand, he liaises with the forest department. He has the traditional knowledge, which I've written in brackets apparently. He says कि हमको सब पता है. In particular, Highlanthus में क्या होता है? Tapping करने के बाद cow dung apply करना होता है, which is the traditional knowledge. He says he knows that. तो लेकिन इसमें he is in the employment of the contractor. He has to ensure maximum production. अगर maximum production करना है तो unsustainable रहेगा ही रहेगा.
वो तो unsustainable हो जाता है, slowly the trees die and slowly we lose the resource from the forest. So alternate value chain का बहुत ज़रूरी है. So that is my suggestion. Next, I have some more slides and just one point. I think I have 2 more minutes, right? So what I'm suggesting is, देखो medicinal plants पे बहुत research हो चुकी है. Taxonomy पे, availability पे, quality पे, agro techniques, drug discovery. Today you saw all these stalls which are there, people are involved in all this. But there's very little knowledge on what is happening at the ground level. What is the institutional framework in which we are working? And India is a storehouse of biodiversity, traditional knowledge, modern science, सब कुछ है. तो हमको क्यों नहीं potential मिल पा रहा है? तो मेरा ये hypothesis है कि इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि जो हमारा institutional framework है, that still needs a lot of work to be done. What is institutions? Just one slide on what I mean by institutions. Many know, but just next slide, please. This is what are institutions. तो values होते हैं. Society places some value on something. उसके जो वैल्यू होता है उसके हिसाब से कुछ नॉर्म्स बनाते हैं. जब तक तो ये बहुत सिंपल रहता है कि एक वैल्यू एक नॉर्म है, तो देयर आर इनफॉर्मल रूल्स ऑफ बिहेवियर. जैसे कि आपने गांव में देखा होगा, जब सिंचाई का सीजन होता है तो नदी से पहले ये फैमिली पानी लेगी, फिर वो लेगी, फिर वो लेगी. इस तरह का भी वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट होता है. तो दैट इज ट्रेडिशनल नॉलेज विच वी डू. बट व्हेन थिंग्स गेट मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, वी नीड टू कम आउट विद एनफोर्सेबल लॉज, रूल्स, लॉज. तब हम पार्लियामेंट रूल्स लॉज बनाते हैं. इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव द गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स विच वी हैव एट द बॉटम. एक एग्जांपल देने के लिए, वैल्यू फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिएगा, वैल्यू इज दैट what is society's value? Society places value on the safety of citizens, right? What is the norm? They'll say, okay, you drive. Let us talk in terms of traffic. So the norm is that we should drive safely. उसके लिए कन्वेंशन बनाना पड़ता है. ड्राइव सेफली का क्या मतलब है? वो कहते हैं ठीक है, एक साइड पे ड्राइव करेंगे. We'll drive on one side of the road. तो वो एक कन्वेंशन हो गया. ये जनरली जब तक तो छोटा सा सोसाइटी है, they'll agree. Everybody agrees कि ठीक है, हम लेफ्ट पे ड्राइव करेंगे या राइट में ड्राइव करेंगे. बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको फॉर्मल करना पड़ता है. फॉर्मल करते हैं तो फिर वो बहुत बड़े गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स चाहिए. फिर आपको ट्रैफिक लाइट्स चाहिए, ट्रैफिक पुलिस चाहिए, रूल्स चाहिए, रेगुलेशंस चाहिए. जब लाल बत्ती होगी तो आगे नहीं जाना है, ग्रीन बत्ती होगी तो जाना है, वो सब. So all that is nothing but a governance structure. That is the institutional framework. अब वो institutional framework, next. अगर medicinal plants पे लगाया जाए, so it is rules of the game. I'll not get into the details of this. Many people know. Why do institutions exist? They exist to minimize transaction costs. What happens? Why is the problem? Because there are vested interests. They all know it. Vested interests say we want to control the institutions. We want the rules and regulations to work in a particular direction. तो ये problem आती है. Next. तो अब medicinal plants में, next slide please. So medicinal plants में अब ये especially relevant if you see the last line. All this is especially relevant for MP's medicinal plants from the wild. अब इसका एक ही example आप देख लीजिए. जो formal हमारे rules हैं, जो National Medicinal Plant Board है, वो कुटकी को cultivate, actually कुट sir, my mistake, I didn't कुटकी. And National Medicinal Plant Board कुट को cultivation के लिए subsidy देता है. Wildlife Act उसको ban करता है कि इसको trade नहीं कर सकते हैं. Now this is the difference of the value I place on kut. NMPB places the value that it should be used in medicine. Wildlife Act places the value that it should be conserved, right? So because of this conflict, there is a conflict of interest and therefore there is a conflict in the conventions. तो मेरी यही गुजारिश है सेंट्रल टीम से, मंत्री जी यहाँ पर हैं और विभाष is here, कि we have to basically harmonize all these rules and regulations, taking care of sustainability, मतलब protection भी हो और industry के requirement भी meet हो. This is all for now, sir. अगर बाद में कुछ और questions होंगे तो I think I've overshot by 1 minute. Thank you so much. इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए, कहाँ से चाहिए? फॉरेस्ट से चाहिए. मंत्री जी और सभी माननीय यही कहेंगे, फॉरेस्ट की संपदा सुरक्षित रखने हैं, तो दोनों का हम कैसे मिलाप करेंगे? मे बी विल डिस्कस इट नेक्स्ट. Especially the conservation and cultivations promotions. Continuing the discussion, I would like to ask Dr. Professor Satyavati Murthy, former Director of Medicinal Environmental Research, DMAPR, Anand, Gujarat. He has got a very vast experience in the area of cultivation and quality planting material. So I would like to ask, quality planting material is a prerequisite for the commercial cultivation of medicinal plants, as we know.
In this respect, NMPB has supported more than 1,000 nurseries for the farmers, for the NGOs. So now we request Professor Mehta to kindly share his views on the interventions required to ensure QPM availability all over India, and also highlights his experience to supply quality raw material. Yes, sir. Mr. Panelists in the this dais, I think that I have been given the two now responsibility of speaking on the quality planting material and the quality of the rod rod. See, if you see the quality planting material, yes, that the ball has been started rolling, and the number of nurseries have been already recognized by this by NMPB. But one thing I think that we must see that in medicinal plant, it is not a single species; it's a commodity. And when you talk about the commodity, you see that there is a diversity of the species, diversity of the genetic material, diversity of the ecosystems, and all these are playing in the planting material. If I see that planting material here, you will find that this quality planting material can be of two kinds. One is the true seeds, and is vegetatively propagated material, what you see. When we talk about the true seeds, I will talk mainly of the true seeds. And true seeds, there are what are the things missing here? In that, if you see that the true seeds has become brought the green revolution in our country, because the seed structure and seed supply structure was strengthened in that way, and that is missing in this one. What is the missing here? Here is a seed certification is not there. Here is the formal seed rule. You know that the Seed Act came in 1966, and they have listed number of the plant species, and those species will be recognized for the certification. And here in medicinal plants, there is no one, no agencies there. You use the certification, and that is why that planting material, when it goes to the what is called cultivation, many times you will find that whatever is. Second thing is there, if you see that the seed chain, a breeder really no, identify a variety, and it is notified by the government of India. Once notified, then there is the seed chain starts with, there is a foundation seed, there is a foundation seed before that, foundation seed 1 and 2, and then it comes to that the certified seed. The certified seed goes to the cultivator. But here in this, if you see that in Isofgul, we have released so many varieties, but none of the varieties you will find that there is an agency who can produce the seed, and is there any certifying system. So whatever it is there, whenever there is a what is called demand, so anything and everything goes for the cultivation. As a result, that we are not able to harness what is called the importance of the variety release. Second thing is that what is missing, the process of certification. Process of certification also in this we have totally missed here in medicinal plants. And you know the process of certification means that there will be inspection before flowering inspection, there will be seed production area, and there will be inspection after 50% flowering. So this inspection process is not there. So you do not the seed. I think these are the things to be introduced. And there are field standard, there are seed standards. All these things are not very clearly defined in medicinal plant. Whereas that if you see the green revolution has brought in the wheat and rice, it is because of all these things have been done. Second, in the formal the seed production program, if you see that, it is also missing. I have said no, that once the breeder seed is produced, then only after 5th generation it goes to the farmers. That is for the certified seed. But here nothing is there. Informal system. A research scientist, he what is called produced a variety, and that variety to farmers, farmer to farmers. So there is no maintenance breeding. After a few generations, you know that it has to deteriorate, and the maintenance breeding is required. That is also missing. I think the NMPB has to think over that these are the loopholes. If we can fill up, probably that will be there. And second thing is that very important thing is that
in medicinal plants, there is no indenting system. See, in wheat and rice, if you go today, if you want that 4 quintal of the certified seeds, the one has to start the producing the certified seed in 5 years before from the breeder seeds. If you can back calculation, you will go that is the quantity of breeder seeds required to produce that much of the quantity of certified seed. That 5 years in advance there is a, but here you know that I was very interested, one experience also that our Director General has given what is called responsibility of our institute that you have to, so many millions of Arjun you have to supply within 6 months. How it is possible? See, these are the things one has to understand. Yes, Arjun seed, I have to germinate it, I have to get it in a stage where I can transplant it. It requires at least 2 to 3 years. So 2 to 3 years after only that can be supplied. So like that, I think that is the thing. Second thing that it's a vegetatively propagated material is very good. It's a very easy in that way because you don't need much certification system there. But one thing is there you will find the vegetative seeds are always that multiplication ratio is less. If you see the aloe, hardly the 14 plant, one plant gives the 14 plants. If you see the chlorophyta, you will find the 6 to 7 plants you will get. So that bulk requirement of the seeds also requires a lot of area. And again, the certification is required here also, I would say. And what I have to, another important thing, because here a lot of foresters are there, I would like to flag this thing, and it is happening, I have seen, that foresters, they are nicely identifying a plus tree. But when somebody asks the material, the seeds from that plus tree is given. Oh no, that is not the thing. If you have to understand the science is that every tree is a heterozygous. Heterozygous means each seed will have a different the genetic identity, and each same plant will be different. So therefore, what we have to do, identify a plus tree, and then immediately work for the vegetatively propagated, how it can be grafting, rooting, and cutting, all these things you have to standardize. And that has to be given as the variety, not that plus tree seeds should be given as a variety. So these are the things we have to, I think that we have to look into and fill up the things. Now coming to that, I will go to this, I have here, one thing I think the medicinal plant board can think of, that we have the seed propagated material. We have to think of like isabgol, senna, and all these things. What will be the replacement ratio of new variety? That has not been, we have not done that thing, and that's why what is happening, the whoever is getting a little bit of material and they are growing, after that they forgetting. So that is one thing I think that you have to look into that to fill up the ground. And I will come to the quality raw material, raw drug. It's an important area. And I think that NMPB has done a wonderful job by what is called doing the GAP and GFCP standards. But before that, I would like to see that the challenges before the Ayush drug industries are the fourth thing. One is that safety. Second thing is the right efficacy. Third thing is the contaminations. And contaminations are, what are the contaminations? Pesticide residue, heavy metals, aflatoxins, and also sometimes you will find the microbial load within the permission level. But all these things starts coming from the field to the industry on the way. You see that from cultivation residue comes, aflatoxin starts from the storage and then transport like that. So this has to be now what is called certified, and NMPB did the GAP and GFCP standards in 2000, way back in 2009, and GFC and GFC certification, they started with the help of the Quality Council of India in 2011. And you know that what was GAP and GFC, and that would guarantee the quality of raw drug, and that will also quality to the science-led world. They will be have a more confidence on this, and then it will also maximizing the sustainable output and ensure the sustainable availability of the raw drug. So with this, if you see that now I come to the point, 11 years have passed now. When the certification has started, voluntary certification was initially initiated, but till today, except 2 or 3, the big companies, nobody has come forward for the certifications of their the quality raw drugs. And second thing is that they may be having the problem. They will tell you. I will not tell their problem. I will be telling the problem of this, what is happening.
And why it is happening, if I have to tell the IUC industry that voluntary certification to let it be the compulsory certification. Otherwise, simply the good manufacturing practices is not going to give you the standards of medicines what you want. Because if it is a computer language, if garbage in is the garbage out. So if a raw drug is not quality, having quality, then you cannot expect the quality of medicines. With this, I think that I conclude that these systems, what is their GAP and GFC certification, this also will take care of the quality. The GAP and GFC certification standards, there it has been also a very good things has been already given, and that's why that this will be a guarantee the high quality of medicines, effective and safe to use, and it also environmentally sounds of sustainable availability of the raw drugs, and it will also help benefit both the producers and users. But one thing I would last that industry should come forward and demand the certificate, not the farmers and the collectors should be in other way around that go for the certification. With this, I thank you very much. I thank the NMPB for giving me this opportunity, but within very short period of 5 minutes, whatever I could say, I could, but if any question is there, I will be happy to answer at a later stage. Thank you. Yes, and we have Balakrishna Maharaji. He has joined from the Paris. We'll come back to you, Balakrishna Maharaji. So before that, maybe come to the industry, because as Professor Maiti has mentioned, that industry should come forward for the certification of the raw material, and garbage in is the garbage out. So that I think that's the buzzword we have to take out, improve the quality of the raw material. Or GAP and GFCP is also the word which we have to follow. So much, sir, for your enlightening जी words. सर्वप्रथम तो NMPB has been working to create market linkages between farmers, collectors, and industry. And for this, we have also launched a platform by the name of eCharak, which has more than 30,000 downloads and more than somewhere around 7,000 registered users. We have also created an NMPB helpline to facilitate the supply chain of medicinal plants, wherein different stakeholders from the medicinal plant sector can, the issues of the stakeholders can be addressed through that helpline. NMPB regularly organizes buyer-seller meets to facilitate trade of medicinal plants. Now, we have with us Chandu Bhai Bhanushali ji. He's president EDMA, and we would request sir to share his inputs, like how can we address the issues of cultivators and the companies, wherein we can ensure the supply of quality raw material to the industry, and at the same time, we can increase the livelihood of the cultivators who are engaged in medicinal plant sector. ADMA is the industry association. Yes. And Chandubai is representing ADMA now. Respected dignitaries on the dais and my friends. I am not a botanist. I am a manufacturer of medicines, and I understand that how the business is going on of the medicinal plants. Why industry prefers to purchase from the traders? Why industry is not going directly to the farmers? Number one. Secondly, whenever there is a problem of shortage of the raw material, the industry start running here and there towards the farmers who are cultivating what? I will give you some problems which industry is facing, the farmers are facing, and for that I am going to suggest some few things which I do not know whether I am right or wrong, but if I am wrong, please correct me. Out of 9,800 approximately manufacturers in the country, almost all purchase is from traders. Please listen carefully. Industry gets good on phone calls and or on mails. Industry do not go to any farmers now. Industry gets credit to the tune of minimum 3 months for the payment
to the suppliers. The industry is in very small scale where it needs, if it needs 1 kg material, he gets from the traders, and even 100 tons also he can get from the traders. But of course, at the higher rate than the farmers. Now, industry cannot keep large stock because of the hampers of the financial status. Normally, grains, fruits, flowers are not sold by the farmers directly to consumers. Industry gets any quantity from 1 kg to 1 ton within 24 hours. Rejected material taken back by traders. Industry gets any variety of species of plants at any time. Get samples for approval before transaction is finished. Coming back to the farmers, these are the issues of industry and the way they are performing their business. Few species are available with farmers. No farmers cultivates 3, 4, 5, 10 species or medicine plants at a time in his farm. Either he goes for only one, ashwagandha only or shatavari only. And if manufacturers want a bundle of the medicinal plants, if he is to manufacture one product, nearly 10 plants to 25 to 60 plants are used in one medicine. If he has to take a batch of a product like a Maharasnadi or Mahasudasan, 52 ingredients, and then how he will go to each and farmers. He doesn't know also that which farmer is cultivating what and where. So he cannot do that. That is why the first choice is the traders, where he gets all this material at a time in 24 hours from the traders. Large quantity of each species is not possible at any time from the farmers. Time of delivery is unpredictable from the farmers. Buyback arrangement is still not much popular except large quantity of buyers, especially extract manufacturers. They need large quantity of medicine plants. They purchase single plant in large quantity. But rate of the goods are less than the traders. Now, my last few suggestions will be there. Scattered locations of farmers is a problem for the traders, manufacturers. Limited buyer-seller interaction leads to mismatch of the demand. He cannot contact farmers at a time, anytime. There should be some written understanding MOU between industry and farmer through RCFC. Because practically it may not be possible due to the requirement of many species and variable quantity. Requirement from different parts of the country too. So there are some plants are not available in Maharashtra. We have to straightway run to the Madhya Pradesh or Karnataka or Kerala also. Now, my suggestion, please listen. I may be wrong. I may be wrong. Please correct me. Of course, whatever I'm going to suggest is not simple, maybe very difficult also. I rely on RCFC. RCFC is the key to do this tough and difficult job of following activities. To set up a consortium of all farmers interested in medicinal plants cultivation and thereby generate data bank. Our RCFC director, Dr. Mokat, is in front of me, and I have told him also that if you don't have the data bank, then it is very difficult to get the material, and farmers also, they do not know which industry is using what. Information of industry can be availed from NMPB, madam. NMPB, which gets information about total consumption of each plant every year, which is supplied by the manufacturers too, as per the Drug and Cosmetic Act Rule 157A. So this information is really available. Now information from and data bank is to be kept ready by the RCFC. Over a period of time, like other markets, like APMC market, grain market, vegetable market, flower market, formation of APMC type market is to be set up where farmers and traders can meet together at same place, which is very difficult. It is very difficult, very expensive also, provided the grant from the government is available. This is not easy initially, but over a period of time, we'll realize the benefit of this chain. And my last suggestion is that
we manufacture also rely on the RCFC, because RCFC is going to give the quality planting material to the farmers, and after that they also taste it for some contents wherever it is available. Then we are very safe in that case. So I am concluding this. Please suggest if I am wrong, or otherwise this is the correct way of linkage between the RCFC, farmers, industry. That is the best way I understand. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि सभी इंडस्ट्री को जो दिल को आपने छू लिया, उनकी जो व्यथा है वो आपने सब बता दी है। तो हमें लगता है कि RCFCs एंड NMPB वी एश्योर यू कि हम करेंगे, डेटा बैंक बनाएंगे। एंड फ्रॉम द इंडस्ट्री वी रियली अपील, जो TA शेड्यूल आपने कहा है वो TA शेड्यूल डेटा टू बी अपलोडेड, क्योंकि 8,700 इंडस्ट्रीज है और हमारे पास 1,500 इंडस्ट्री का TA शेड्यूल आता है। अगर हर कोई करे तो कंजम्पशन का वैल्यू और वॉल्यूम का डेटा भी हमें मिल जाएगा, एंड दैट विल रियली हेल्प फार्मर्स कि कौन सी प्रजाति को हम लगाएंगे और कौन सी को हम नहीं लगाएंगे। हमारे समक्ष आज माननीय मंत्री जी भी है, तो ट्राइबल्स जो फॉरेस्ट में जो कलेक्शन है, क्योंकि आपने सही कहा कि फार्मर्स को एक एग्रो टेक्निक्स हो, उनको ज्ञान हो और उसका डेटा बैंक हो। 80% से भी ज़्यादा कलेक्शन ट्राइबल से, फॉरेस्ट से होता है, वो जो उसके हकदार है। तो हमारे वी आर रियली हैप्पी एंड वी आर ब्लेस्ड टुडे टू हैव मैडम विनीता श्रीवास्तव, एडवाइजर फ्रॉम द ट्राइबल मिनिस्ट्री। शी हैज जॉइंड ऑनलाइन। तो हमें ट्राइबल्स की भी क्या व्यथा है और उनको एक प्रशिक्षण कलेक्शन अगर हम अच्छा करें तो हम उनको भी हम हक दे सकते हैं, और इंडस्ट्री को भी रॉ मटेरियल अच्छे क्वालिटी का हम दे सकते हैं। और वो जो सीड एक्ट जो उनसे है वो भी हम कैसे उसका ऑगमेंटेशन करें ये भी सोच सकते हैं। So the Ministry of Tribal Affairs provides training on scientific collection, harvesting and establishing primary processing facilities for the tribal forest gatherers of the medicinal herbs under Vandhan Yojana and Vandhan Vikas Kendra. And we are really happy कि Ministry of आयुष के तहत मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और ट्राइफेड का MOU हुआ है, जिसमें जो ट्राइब्स जो आउटलेट है उसमें आप मेडिसिनल प्लांट भी देखते हैं। देयर इज अ MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या मैकेनिज्म है, हाउ वी रियली गिव मैक्सिमम शेयर टू द ट्राइब्स, और उनको प्रशिक्षण देके, अच्छी शिक्षा देके कलेक्शन का, हार्वेस्टिंग का, GAP, GFCP, गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस जो आनंद में DMEPR के साथ हमने बनाई है, तो उसका अगर प्रशिक्षण देने का भी सपोर्ट सिस्टम NMPB में है। सो मैडम, कैन यू प्लीज एलॉबरेट अस ऑन how we support the tribals for the MSPs on medicinal plant, and how we really support the industry also in providing the raw material and linkages of the tribes to the industry. So Madam Vinita Srivastav, are you online? मैडम ज्वाइन हो गई है तो हम सुनना चाहते हैं। अगर मैडम ज्वाइन नहीं हो गई तो वी हैव बालकृष्ण महाराज जी हु इज ऑल्सो ज्वाइन ऑनलाइन। और कोविड पैंडेमिक से लेके न्यूट्रास्यूटिकल्स और बाकी मेडिसिनल प्लांट का रॉ मटेरियल, आपका म्यूजियम भी बहुत अच्छा है, एग्रो टेक्निक्स आपने डेवलप की है, और मेडिसिनल प्लांट को बढ़ावा देने के लिए आपके पास कुछ सॉल्यूशन है। व्हाट यू मेंशन ओवर द फोन that you have 1, 2, 3 important solutions which can resolve the problem of the industry as well as the collectors and the cultivators, and you have created a success model to your value chain. How do we really create a good value chain, supply chain management? बालकृष्ण महाराज जी, we are really thankful to you. आप पेरिस में किसी और एक सेमिनार के लिए, वेबिनार के लिए आप आज फ्रांस में, पेरिस में, देयर इज अ टाइम लैग ऑल्सो। इन स्पाइट ऑफ दैट योर पैशन, that is commitment is the one which you have joined us with us. So over to you Balkrishna Maharaj. Thank you. मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। इस भारत भूमि से बाहर फिर भी मैं
आप सबकी चिंता में अपनी चिंता जोड़ते हुए, क्योंकि हम चाहे कहीं भी रहें, हमारी चिंता हमारा देश है, हमारी प्रकृति है, हमारी प्रवृत्ति है, हमारी परंपरा है, हमारा संस्कार है। मैं आज इस आपकी सब विद्वज्जनों के वक्तव्य को सुन रहा था। सर्वप्रथम तो आज चीफ गेस्ट के रूप में आदरणीय हमारे माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी को मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूं यहाँ से, और आदरणीय डॉक्टर मोहन पात्रा जी, और आदरणीय श्री लोकरंजन जी, आदरणीय प्रोफेसर तनुजा बहन जी, और आदरणीय दुष्यंत किशोर जी, आदरणीय विजय कुमार जी, आदरणीय कविता त्यागी जी, आदरणीय सुशांत सूद जी, आदरणीय दिलीप प्रजापति जी सहित सभी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, विद्वज्जन हैं, और इसको लेकर के जो आप चिंतन और चिंता कर रहे हैं, मैं आप सबको नमन करते हुए दूर से मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ी कनेक्टिविटी की भी थोड़ी सी परेशानी है, पर मैं आपको देख पा रहा हूँ। संभवतः अभी हमको सुन पा रहे होंगे, तो मैं संक्षिप्त में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमें, जब हम औषधीय पौधों की बात करते हैं, तो हमको सर्वांगीण रूप से सोचना होगा कि हमारे देश के अंदर कितने ऐसे पौधे हैं जिनको औषधि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वह शास्त्रीय रूप में हो, चाहे वह परंपरा के रूप में हो। थोड़ी सी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ। टीएमसी के रूप में चाइनीज ट्रेडिशन मेडिसिन सिस्टम वाले लगभग आज अपने औषधीय पौधों का 13,000 पौधों का उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कर चुके हैं, और हम लोग, हमारे शास्त्रों में लगभग 700 पौधों का वर्णन है। उनमें से यदि मैं बात करूं कि ट्रेडिशनल पौधों को मिला दिया जाए तो लगभग 400 पौधे और होते हैं। लगभग 1100 पौधों को हम औषधीय रूप में प्रयोग करते हैं। उनमें से यदि आयुर्वेद के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं या हम लोग बात करें, तो लगभग हम 300 साढ़े 300 पौधों का ही अधिकांशतः प्रयोग होता है। तो जो 350 पौधे हैं, उन पौधों को भी यदि हम व्यवस्थित रूप से काम करना शुरू कर दें, तो ये बहुत कठिन कार्य नहीं है। परंतु अभी जो मैं महसूस करता हूँ, जो हमें कठिनाइयां होती हैं इस देश के अंदर, भगवान ने जो जैव संपदा है, जैव विविधता है, हमारी भारतवर्ष की यह शक्ति है, ताकत है। इसीलिए हमारे यहाँ जो दुनिया के अंदर जो प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी है, लगभग 3,60,000 के लगभग पौधे पाए जाते हैं। उनमें से हमने पूरे विश्व के वन पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को इस तरह से इकट्ठा करने का प्रयास किया कि कितने पौधे हैं जो औषधीय रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो ऐसे पौधों की संख्या लगभग हमने 60,000 से ज्यादा पौधों की लिस्ट बना करके वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया पतंजलि बना रहा है, जो लगभग 4.5 लाख से ज्यादा रेफरेंसेज हैं, जिसके अंदर 1800 से ज्यादा भाषाएं हैं। दुनिया के 2000 से ज्यादा जो ट्राइबल्स हैं, उन सबको उससे हमने समावेश किया है। पिछले 15 वर्षों से हमारे 300 से ज्यादा वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो मैं अभी जो निवेदन करना चाहता हूं, कि जो हमने महसूस किया कि जो हमारे शास्त्रीय पौधे हैं, सर्वप्रथम तो क्योंकि नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड या बाकी जो भी हमको आदेश होगा, हम भी उस कार्य को करने के लिए तैयार हैं। जो मुझको लगता है कि हमें औषधीय पौधों की जो हमारे प्रॉपर उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, फ्लोरा के रूप में, कहाँ पर कितने औषधीय पौधे उपलब्ध हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरा प्रॉपर ढंग से डॉक्यूमेंटेशन और उसकी पूरी फ्लोरा के ऊपर, और हम पूरा जो डेटा है उसको अच्छी तरह से हम हर्बेरियम सहित एक कलेक्शन का काम करें। यह प्रयास पतंजलि के द्वारा विगत कुछ वर्षों से किया भी जा रहा है। तो पहले हम लोग पूरे देश की उपलब्धता का यदि प्रॉपर एनालिसिस कर पाएंगे, तो कितना हमारे अंदर गैप है, कितनी अनुपलब्धता है। जैसे हमारे एक विद्वान बता रहे थे, मैं सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और दूसरी बात, जब औषधीय पौधों की उपलब्धता पूरे देश के अंदर कहां पर कितनी मात्रा में है, पहला ये पता चले, तो दूसरा हमको ये पता करना जरूरी है कि जो एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि जो औषधीय गुण है
अलग अलग जगह के एक ही पौधा, यदि वो जैसे हल्दी की ही बात करूं, करकुमिन जो है साउथ की हल्दी में अलग मात्रा में है, उत्तराखंड की हल्दी में अलग मात्रा में है, आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो सबसे ज्यादा वो एक्टिव जो कंपाउंड है वो अवेलेबल है। इसी तरह से हमने बहुत सारे पौधों का, एक ही औषधीय पौधे का, जैसे अश्वगंधा की बात बहुत होती है, तो अश्वगंधा की हो चाहे दूसरे पौधों की, हमने पूरे देश के अंदर से अलग अलग सैंपल्स उठा करके, अलग अलग टाइम पर उठा करके, उनके एक्टिव कंपाउंड को एनालिसिस कर करके बृहद स्तर पर डॉक्यूमेंटेशन करने का प्रयास किया है। जब तक उच्च गुणवत्ता युक्त औषधि की उपलब्धता नहीं होगी, तब तक हम कभी ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छी औषधि बना पाएंगे। तो हमारी जो फार्मेसियां हैं, बहुत सारे जो लोग फार्मेसियां हैं, हमारी छोटी छोटी फार्मेसियां हैं, उनके पास इतने संसाधन नहीं है, इतना वो लोग एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो एक समवेत रूप में सरकार के स्तर पर यदि ऐसा प्रयास होता है तो इस कार्य को बहुत व्यापकता के साथ में और गंभीरता के साथ में बहुत जल्दी ही इस कार्य को किया जा सकता है। और दूसरी बात, क्योंकि आदरणीय भूपेंद्र यादव साहब बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो वन क्षेत्र है या कृषि क्षेत्र है, जितने भी पौधों को उगाया जा सकता है, जैसे अभी अर्जुन की छाल की बात हो रही थी, एक अर्जुन का वृक्ष तैयार होने में 30-40 साल लग जाता है, 20 साल लग जाता है जो अच्छा पेड़ तैयार होने में, और छाल उतार करके खत्म करने में पेड़ को कुछ दिन भी नहीं लगता है। क्या हम भारतवर्ष के अंदर जितने भी जो औषधीय वृक्ष हैं या औषधीय जो विधाएं हैं, उनका जो कल्टीवेशन वाली जो व्यवस्थाएं हैं, अभी भी इतनी जटिलता होती है जो किसान जो उगाता है, जैसे आप कह रहे थे कि ट्रेडर्स के साथ में जब हम जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए क्यों उत्सुक रहते हैं, मैं अपनी मजबूरी निवेदन करना चाहता हूं, किसान जब वो उगा करके हमारे पास लेकर के आना चाहता है, उसको इतनी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है कई जड़ी बूटियों को लेकर के, वह कर नहीं पाता है। पर ट्रेडर किसान से उसी जड़ी बूटी को लेकर के जो फॉर्मेलिटीज है, पेपर वर्क पूरा करता है, और कई महंगे रेट में हमको खरीदने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि बिना दस्तावेजीकरण के, बिना ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के हम उसको खरीद नहीं सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था है यदि बेहतरीन हो जाता है, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे हमारे जितने भी जंगल जो पहाड़ वाले क्षेत्र हैं, चाहे हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, या सिक्किम है, या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, यहाँ सब जगह पर यदि उन जमीनों पर यदि वो किसी भी वृक्ष को लगाता है, क्योंकि उनकी समृद्धि का साधन वो वृक्ष हैं, समृद्धि का साधन पेड़ पौधे हैं, यदि हम लगा करके ये वन विभाग से सुगमता के साथ में सबको देने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए हम यदि व्यवस्था कर पाते हैं, तो हमको लगता है कि एक बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। इसी तरह से जो कृषिकरण और जड़ी बूटी प्रशिक्षण के लिए एक नेशनल लेवल का हमारा प्रोटोकॉल होना चाहिए, जो हम महसूस करते हैं, और थर्ड पार्टी इवेल्युएशन होना चाहिए। जितने भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको एक अलग से, जैसे आज की जैसी जो भी क्यूसी क्यूए वाली जो हमारी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से होनी चाहिए, जिससे कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो प्रॉपर ट्रेनिंग की जगह पर हमको अलग अलग तरह के प्रैक्टिकल मॉडल बना करके, क्योंकि जब हम खेतों को, किसानों को जो उगा रहे हैं, उनको एक आदर्श मॉडल के रूप में हम सामने लाएंगे, तो किसानों को उत्साह और जड़ी बूटी उगाने के प्रति रुचि बनेगी। और इसके अतिरिक्त एक जो हम महसूस करते हैं कि पूरे देश के अंदर बात हो भी रही है कि ठीक है, नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड में बहुत सारे रजिस्टर्ड हैं, बहुत सारे किसान लोग हैं, परंतु उस डेटा को इस लेवल तक हम जियो फेंसिंग करें, जियो टैगिंग करें, और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उनका जो लैंड होल्डिंग के साथ में, उनका खसरा और सर्जरी के साथ में एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना करके पूरा मेडिसिनल प्लान सिस्टम को ई गवर्नेंस के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पे ला करके वो इतना विजिबल हो सबके लिए, जो बेचने वाला है, खरीदने वाला है, सेलर वायर इतनी कंफर्ट लेवल पर आ जाए। किसान चाहता है कि मुझे फिक्स प्राइस पर बेचना है या मुझे ऑक्शन पे बेचना है, वो सारे ऑप्शन से यदि इजीली अवेलेबल हो, तो इससे जो बीच के बिचौलिए हैं या दूसरे जो लोग हैं जो कमीशन के ज्यादा जो लाभ जिनको मिल रहा है, उन लोगों को हम हतोत्साहित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो जैविक प्रमाणीकरण की व्यवस्था है, क्योंकि ऑर्गेनिक के ऊपर हमने देखा है महाराष्ट्र आदि कई जगहों पर किसान लोग जड़ी बूटी उगाते हैं, परंतु वहां पर वो लोग यूरिया वगैरह भी डाल देते हैं। हमारे पास जड़ी बूटी कृषिकरण के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की ऐसी ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अभी जैविक कृषिकरण की यदि हम बात करें, जैविक सर्टिफिकेट लेना इजी है, परंतु वह किसी भी तरह से अजैविक द्रव्यों का वो प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसको मापना बहुत कठिन
कठिन है। हम जानते हैं कि बहुत सारी जगह पर जैविक सर्टिफिकेशन होते हुए भी वह अजैविक जो प्रैक्टिस जड़ी बूटियों के ऊपर हो रहा है, उसकी वजह से उसकी गुणवत्ता में बहुत कमी आ रही है। तो ये कुछ बिंदु थे। यदि इन चीजों के ऊपर गहन चिंतन हो करके यदि हम समाधान के स्तर पर ले जाते हैं, तो न केवल जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के रूप में पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो रॉ मटेरियल, आज हमें ये बताते हुए कष्ट होता है कि हमको चाइना से रॉ मटेरियल मंगाना पड़ता है, हमको पाकिस्तान से मंगाना पड़ता है, हमको बाहर के देशों से मंगाना पड़ता है, वो स्थिति हम देश के अंदर समाप्त कर सकते हैं। तो जो किसानों को उत्साहित करने वाली, उनको प्रोत्साहन मिलने वाली जितनी भी योजनाएं हैं, समवेत रूप में एक जगह पर यदि हम व्यवस्थित रूप से कर पाएं, तो हमको लगता है कि जड़ी बूटियों का प्रयोग भी बढ़ेगा। आप जानते हैं कि कोरोना के टाइम पर जितना भी हम लोगों ने भी एक विनम्र प्रयास किया, आज भारतवर्ष की औषधियों के संदर्भ में, मैं पेरिस में यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर भी बहुत सारे यहाँ के लोगों ने भी जड़ी बूटियों की, आयुर्वेद की अब चर्चा करने लगे हैं। दुनिया के अंदर लोगों को आयुर्वेद शब्द का भी पता नहीं था, उसका अर्थ क्या है, अब वो आयुर्वेद को जानने लगे हैं। हम लोग मानते थे कि जो हर्बल मेडिसिन यूज करने वाले लोग वो आयुर्वेद वाले ही हैं, ऐसा हम प्रायः मानते थे। परंतु जैसा आयुर्वेद है उसी तरह से 70 से ज्यादा जड़ी बूटी आश्रित बॉटनी बेस्ड मेडिसिन सिस्टम पूरी दुनिया में है। तो हम उन पद्धतियों में आयुर्वेद को अग्रणी बना सके, आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर सके। तो इसके लिए जो आप लोगों का प्रयास है, जहां तक रही पतंजलि की बात, पतंजलि सर्वथा सर्वत्मना, आप राष्ट्र हित के लिए, किसानों के हित के लिए, आयुर्वेद के उत्थान के लिए आप जो आदेश करेंगे, कॉमर्शियल एंगल से नहीं, सेवा की भावना से, किसानों को जीवन में, किसानों की जीवन में खुशहाली लाने की भावना से, और जो डिजिटल एग्रीकल्चर के हिसाब से जो डॉक्यूमेंटेशन, डेटा एनालिसिस से लेकर के केमिकल एनालिसिस तक का काम हम करने में सक्षम हैं, तो वो सब हम करने को तैयार हैं। तो जो आप लोगों को इसमें निर्णय होता है आप बता देंगे, तो हम उसको करने के लिए सक्षम हैं। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं स्थूल रूप में आप सबके बीच में आज उपस्थित नहीं हो पाया। पुनरअपि आप सबके प्यार ने हमको इतने दूर से भी आज हम जुड़ पाए हैं। तो इतना कहता हुआ, और इसकी जो मिनट्स बनेंगे उसको भी मैं पढ़ूंगा, और जो हमारे लायक होगा आप बताएंगे। इतना कहता हुआ मैं विनम्रता पूर्वक क्षमा सहित अभी विदा चाहूंगा। आप सबको मेरा प्रणाम। ओम वंदन। आपने बहुत ही बिल्कुल अचूक ऐसे जो इश्यूज है और सॉल्यूशन बताए, डेटा मैनेजमेंट, ई गवर्नेंस की बात करी, तो हमारा ई चरक है, ऐसे ही कई प्लेटफॉर्म हम बना के डॉक्यूमेंटेशन, जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट में बोर्ड ने जो अनुदान देते हुए भारत के कई फॉरेस्ट इलाकों में जो MPCAs बनाए हैं, मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया, उसका सर्वे और डॉक्यूमेंटेशन का एक प्रोजेक्ट हाल ही में मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने दिया है। तो मुझे लगता है ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट है जो हम डॉक्यूमेंटेशन करके और हमारे फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के साथ भी लगातार संपर्क करके हम उसको आगे बढ़ाएंगे। नाउ जस्ट कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, यस सर। We have covered the cultivation aspect and the quality aspect also about the farmers' welfare. So just continuing the discussion, the next question I would like to ask from Dr. Sitanshu Kumar, Director Medicinal Plant Research. He is the presently serving, and he has a vast experience and associated with the Ministry of Agriculture, Farmers' Welfare. Sir, for successful production of quality planting material, I'm covering all the aspects in herbal sector: quality planting materials, cultivation, post-harvest management, marketing. A network of robust mechanisms required, both at central and state level. And Ministry of Agriculture has existing infrastructure and technical expertise. Besides institutional setup like Directorate of Medicinal and Aromatic Plants Research, Anand, Gujarat, CFED for marketing if you talk, Central Institute of Post-Harvest Engineering and Technology, Ludhiana, and NAFED, National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India, for marketing, Department of Marketing and Inspection, and also with the farmers, Small Farmers Agribusiness Consortium, along with the network of APMC mandis and support of state agriculture universities and Krishi Vigyan Kendra. So in the entire, we can see the starting from cultivation to marketing, all aspects are dealt in different crops.
especially in horticulture crop also, by Ministry of Agriculture and Farm Welfare. So in this respect, NMPV, if you talk of cultivation, we have supported 56,000 area under cultivation as a subsidy in last 5 years. So now we request Dr. Satyanshu Kumar ji to address that how to fulfill the huge supply gap to the growing industry demand, as it has been told by many industries, and availability of infrastructure facilities at existing APMC mandis for marketing of medicinal plants. Sir, please. आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, आदरणीय मंत्री गुजरात सरकार, and distinguished panelists and dear delegates. I represent Indian Council of Agricultural Research, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गुजरात में आनंद जिले में एक राष्ट्रीय संस्थान बनाया गया है जिसका नाम डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट रिसर्च है। और इससे पहले भी आईसीआर में एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना चल रही है 70 के दशक से ही, जिसका नाम है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो आईसीआर डीएमएपीआर आनंद और एआईसीआरपी ऑन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के द्वारा लगभग 50 मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स पर जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के होल एस्पेक्ट है, फ्रॉम कंजर्वेशन and development of the agro techniques, good agricultural practices, as well as the varietal development programs, उसमें काम हो रहा है। और जो हमारे AICRP मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट के सेंटर्स हैं वो इंडिया में 26 हैं और ऑलमोस्ट ऑल एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में स्थित है, क्योंकि जो लोकेशन स्पेसिफिक एग्रो टेक्निक्स फॉर पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट डेवलप करना है, वो पर्टिकुलर एक हमारा जो AICRP सेंटर्स जो कि कश्मीर से लेकर के पासीघाट और त्रिशूर और जोरहट इन सब जगहों में स्थित है, उन जगहों पर काम हो रहा है। तो जहाँ तक सस्टेनेबल क्वालिटी प्रोडक्ट क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल और मटेरियल अवेलेबिलिटी की बात है, तो जैसा कि पहले से ही बिगनिंग से ही बताया गया है कि अबाउट 85% रॉ मटेरियल अभी तक हमारा फॉरेस्ट से ही आ रहा है। But to make the supply more sustainable, as well as to make the uniformity in quality, because medicinal plant में एक जो सबसे बड़ी important चीज है, that is the presence of the bioactive component, and because of the bioactive components it has the medicinal efficacy। तो उसमें क्या होता है कि यदि आप different location से collect करते हैं तो invariably there will be variation in the content of the bioactive component, and that will lead to the variation in the efficacy. To meet out that requirement, the development of the proper agro techniques is must, and our ICR Institute and AICRP is already working in that direction very vigorously. And in addition to that, what is the most important thing, that in addition to the varietal development program, हमें उन species पर ज़्यादा ध्यान रखना है जो ग्रेजुअली RET की कैटेगरी में आ जा रहे हैं। RET आई मीन रेयर इंडेंजर्ड थ्रेटेंड। पर्टिकुलरली 2-3 स्पेसीज मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑलरेडी RET के कैटेगरी में आ गए हैं, जैसे चिरायता है, कुटकी है, ये सब ऑलरेडी RET की कैटेगरी में आ गए हैं और इनका सफिशिएंट जो मटेरियल है इसका मिलने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इनके लिए प्रॉपर एग्रो टेक्निक्स और उनका मल्टीप्लिकेशन या कंजर्वेशन के डायरेक्शन में जितना काम होना चाहिए वो काम अभी भी थोड़ा होना और बाकी है। इसके साथ ही साथ जो यूनिफॉर्मिटी इन क्वालिटी की बात है, तो उसमें एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम लोग कर रहे हैं, that is fine. In addition to that, we also have to concentrate more vigorously on the development of the research related to the
केमोटाइपिक ब्रीडिंग। केमोटाइपिंग ब्रीडिंग का मतलब ये है कि जो भी आपके लिए मेडिसिनल प्लांट जो आप जिनकी कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट फॉर ईच एंड एवरी मेडिसिनल प्लांट जो बायो एक्टिव कंपाउंड है वो डिफाइंड है, या उसको हम लोग कहते हैं कि मार्कर फिक्स्ड है। तो उसका कंटेंट को कैसे बढ़ाया जाए, तो उस डायरेक्शन में भी काम करने की आवश्यकता है। और उसमें यदि हमें सफलता मिल जाती है तो हमारे पास में एक बहुत बड़ा ये स्ट्रेंथ हो जाएगा कि हम ग्रेजुअली जो है यूनिफॉर्म क्वालिटी के मटेरियल ओवर द पीरियड सप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल सप्लाई और मटेरियल रॉ मटेरियल सप्लाई के अलावा जो एपीएमसी मंडी में की बात है, तो वहां पर क्या होता है कि जो मेडिसिनल प्लांट है, आप सभी जानते हैं मेडिसिनल प्लांट का जो प्राइमरी प्रोसेसिंग है, प्राइमरी प्रोसेसिंग का के बाद जो है वो उसको स्टोरेज में रखा जाता है डिपेंडिंग अपॉन दी और नीड उसको सेल करने से पहले। तो मंडी में क्या होता है कि जो क्वालिटी बेस्ड कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि क्या किस तरह से उसका फार्मर्स को रेट दिया जाए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। तो इस डायरेक्शन में हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि यदि जो बहुत सारी मंडियों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप किए गए हैं कि कुछ रैपिड टेक्निक अभी आ गई हैं, जैसे स्ट्रिप बेस्ड टेक्निक पहले हुआ करता था, तो कुछ ऐसी रैपिड बेस्ड टेक्निक आ गई है कि जिसको आपको तुरंत आपको जो भी रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा और उसमें कोई प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत रैपिड बेस्ड टेक्निक होती है। तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मार्केट में कभी कभी देखा जाता है कि जो बायो एक्टिव कंपाउंड्स होता है, जो मार्कर होते हैं, तो उसकी जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। ये लैब टू लैब और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री यदि आप उसको एनालिसिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। तो इस वेरिएशन के पीछे का मूल कारण क्या है कि जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है या इंडस्ट्री है या ट्रेडर है, दे यूज डिफरेंट मेथोडोलॉजी फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द मार्कर कंपाउंड और बायोएक्टिव कंपाउंड्स। तो एक कोई इस तरह के नेशनल गाइडलाइंस बनाया जाए कि यदि यूनिफॉर्म मेथोडोलॉजी जो यदि यूज किया जाए तो इस तरह के जो वेरिएशंस होते हैं, इस तरह के वेरिएशंस को अवॉइड किया जा सकता है और एग्जैक्टली हमें पता चल सकता है कि ये अक्रॉस द लोकेशन की जो वेरिएशन है क्वालिटी का वो क्या है, और हमारे पास में जो वेरिएबिलिटी है वो कितना है, कितना ज़्यादा है बायोएक्टिव कंपोनेंट में हम यदि डिफरेंट लोकेशन में ग्रो करते हैं तो कितना वेरिएशन हमारे पास में आता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारा ICAR के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल सप्लाई का या जो प्लांटिंग मटेरियल के लिए हमें असाइन किया जाएगा, we will try our best to make that task accomplished. And before I stop my words, I would like to NMP thank you very much NMPB for giving me an opportunity. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। ICAR जो एग्रीकल्चर रिसर्च है उसका इसकी भूमिका और उसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपने क्वालिटी जो रैपिड टेस्टिंग की बात करी वो शायद NMPB के लिए और सभी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस होगा। हमें 4:30 से पहले ये खत्म कंक्लूड करना है, हमारे पास समय की मर्यादा है। सभी लोग यहाँ जो आए हैं वो माननीय मंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए आए, सेक्रेटरी डोनर है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं सभी एस्टीम पैनलिस्ट को निवेदन करूं कि अगर ब्रीफ में अगर आप हमने की कहे और मे बी वी विल हैव अ फोकस ग्रुप डिस्कशन इन फ्यूचर ऑल्सो विथ ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर्स। लेकिन सब लोग ये जानने के लिए उत्सुक है, यहाँ इंडस्ट्री बॉडीज है, सभी हमें लीडर्स हमें इंडस्ट्री के यहाँ दिख रहे। तो इंडस्ट्री को 85% रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से आता है। माननीय मंत्री जी भी है, बट वी हैव श्री विवास रंजन जी ADG फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को भी देखते हैं।
तो जो कल्टीवेशन का जो लोड, तो एक जो माननीय मंत्री जी ने भी कहा कल्टीवेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें हम रॉ मटेरियल का, लेकिन फॉरेस्ट में ही रिसोर्स मैनेजमेंट जो सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ द फ्यूचर ये कैसे कर सकता है, व्हाट कैन बी द मैकेनिज्म ऑफ द रॉ मटेरियल वो जाए एंड द फ्यूचर जनरेशंस आल्सो विल रिसीव द सेम सप्लाई, क्योंकि इंडस्ट्रीज अगर बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो सप्लाई चेन भी सस्टेनेबिलिटी भी हो, डिमांड भी मीट करे, एट द सेम टाइम फॉरेस्ट को भी हम बचा के रखे. So what could be the mechanism? These are the two big issues. Maybe we would like to know from Sri Vivas Ranjan ji, ADG Forest now. थैंक यू. आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, नई दिल्ली, मंच पर आसीन सभी हमारे सम्मानित सदस्यगण, दो तीन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें उठाए गए हैं कि सस्टेनेबिलिटी कैसे होगा. हम अपनी शुरुआत करते हैं स्टैटिस्टिक्स से. WHO ने कहा था 2100 स्पीसीज है मेडिसिनल प्लांट का जो मेडिसिन में इस्तेमाल होता है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और इंडिया में 150 स्पीसीज हैं जो ऑल मेडिसिनल प्लांट बनाने में या मेडिसिन के एक्सट्रैक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है. 2002 की एक पुरानी स्टडी है जिसमें कहते हैं 48 स्पीसीज को हम जो इंडिजिनस है उसका इस्तेमाल करते हैं और 42 स्पीसीज को जो इंपोर्ट होता है उससे हम मेडिसिन बनाते हैं. ये मोटे मोटे हम स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं. इसका मतलब है कि ओरिजिनली जब एनएमपीबी का क्रिएशंस किया गया था तो ये बातें ध्यान में रखी गई थी कि फॉरेस्ट से निकलते निकलते हमारा स्पीसीज जो भी निकला मेडिसिनल प्लांट्स के लिए वो ग्रेजुअली इंडेंजर्ड होता रहा, और आज की डेट में हमारे पास बेंचमार्क सर्वे नहीं होने के कारण कि कौन सी प्रजातियां कितनी है, कितनी उसको निकलनी चाहिए जंगल से, और क्या स्थिति हमारी हो गई है, इसको इनकाउंटर करने के लिए कल्टीवेशंस को बढ़ावा देने की बात हुई थी. और ये कहा गया था कि हम इसको दो पार्ट में लेंगे, एक्सिटू कॉन्जर्वेशंस करेंगे, इन सिटू कॉन्जर्वेशंस करेंगे. जो फॉरेस्ट एरिया के मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसको हम कंजर्व करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट इन ट्रेडेड कम्युनिटी है, प्रायोरिटी पहले 32 स्पीसीज की बनाई गई थी, वो 32 स्पीसीज का एग्रीकल्चर या कल्टीवेशंस होगा. शुरुआत में एनएमपीबी का ऑब्जेक्टिव ये था. उस 32 स्पीसीज का कल्टीवेशन टेक्निक भी स्टैब्लिश किया गया, काफी प्रमोट भी किया गया, बट ग्रेजुअली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इस इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हुआ और नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ते चले गए. हमारे मित्र ने एक बड़ा अच्छा मुद्दा रेज किया कि हमको फॉरेस्ट के रूल्स रेगुलेशंस को शिथिल करना चाहिए. इस पर मैं कहना चाहूंगा कि एक जिस स्पीसीज जो ससुरिया लापा का आपने नाम लिया था, इस स्पीसीज का कल्टीवेशन प्रमोट करने के लिए हिमाचल गवर्नमेंट को प्रमोट किया गया और मिनिस्ट्री से परमिशन जारी की गई. इसका मतलब वो स्पीसीज जो थ्रेटेंड स्पीसीज है, जो आरईटी स्पीसीज है, जो रेयर, इंडेंजर्ड, थ्रेटेंड है, उसको हम कल्टीवेशन से ही बचा सकते हैं. और अब रिसर्च एस्टैब्लिश कर दिया है, हमारे केएफआरए ने एस्टैब्लिश किया 2020 में सर, कि वाइल्ड और कल्टीवेटेड दोनों में पहले माना जाता था कि वाइल्ड में अल्कलॉइड्स ज्यादा अच्छे होते हैं, कल्टीवेटेड में नहीं होते हैं. इसको गलत कर दिया. इसका मतलब है कि कल्टीवेटेड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है अगर हम रेगुलेटेड कंडीशंस में उसको कल्टीवेट करें. नेचुरली जो वाइल्ड में पाया जाता है वो हैबिटेट स्पेसिफिक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है, एक पर्टिकुलर रेंज में होता है, उसका पॉपुलेशन साइज है, स्पीसीज डाइवर्सिटी वहीं पाई जाती है, उसकी कोई टेक्निक हमें पता नहीं है. कुछ स्पीसीज की नर्सरी टेक्निक हमें पता है. इसका मतलब है जेनेटिकली या टिश्यू कल्चर के माध्यम से उसका प्रोपगेशन से कल्टीवेशन के बढ़ावा दे सकती है. तो नट शेल में ये कहा जाए कि हम ऐसे स्पीसीज जो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अहम हैं और ट्रेडेड वैल्यू रखते हों, इनका जंगल के अंदर कंजर्वेशन किया जाए, प्रमोट किया जाए, और इसके बाहर कल्टीवेशन को बिल्कुल लार्ज स्केल्स पे प्रमोट किया जाए. और आपने अभी अमृत महोत्सव में अपना एक टारगेट भी रखा है कि 75,000 हेक्टेयर आप मेडिसिनल प्लांट का एरिया बढ़ाएंगे.
तो मेरा ये कहना है कि उन क्षेत्रों में भी आप इस तरह की नर्सरीज को जो इंपॉर्टेंट ट्रेडेड वैल्यूज का है उसकी जानकारी देंगे। दूसरा एक और बात आई थी, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि आपको किस स्पीसीज की कितनी क्वांटिटी चाहिए, कब चाहिए। हम लोग खुद एक बार एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री में गया था सर, और हमने पूछा कि आप बेल का आंवला बनाते हैं, बेल का मुरब्बा बनाते हैं, आपको कितना बेल चाहिए। उन्होंने कहा ये हम आपसे नहीं बताएंगे, जबकि हमारे पास हमारे जंगलों में बेल की क्वांटिटी जो उपलब्धता है बहुत है, हम दे सकते हैं, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं दी गई। एक दूसरा बताते हैं एग्जाम्पल, नमामि गंगे योजना के तहत उत्तर प्रदेश में गंगा डिस्ट्रिक्ट्स में जो 27 डिस्ट्रिक्ट थे उसमें से कुछ जनपदों में वेटिवर ग्रास को प्रोड्यूस करने के लिए लाई सरकार ने। हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट 100 टन की है, हम प्रोड्यूस अभी 20 टन कर रहे हैं। अब उस किसान से कैसे लिंकेजेस स्टैब्लिश करे ट्रेडर या इंडस्ट्री, लैक करता है, जबकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, समय केवल 3 महीने लगते हैं, फिर भी हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास लैक ऑफ इंटरेस्ट है या डेफिशिट, हमारे पास लिंकेजेस हम स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं ग्रोवर्स, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रीज में। एक बात आई थी क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की, बिल्कुल सही है कि मेडिसिनल प्लांट का सीड क्लोन हमारे पास नहीं है। हमारी रिसर्च के अनुसार अभी तक हमने, मंत्रालय ने आईसीएफआरए में 67 प्रजातियों का क्लोनल प्रोपगेशन स्टैब्लिश किया है, लेकिन ये सारी ट्री वैरायटीज हैं। इसका मतलब है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम अभी भी बहुत होना इसमें बाकी है, और इसमें इंडस्ट्री जरूर सामने आए कि जो उनको स्पीसीज चाहिए उसका टिश्यू प्रोपगेशन, उसका माइक्रो प्रोपगेशन कैसे होगा, इसमें इंडस्ट्रीज को सामने आना चाहिए। चौथा, एक और बात रखी गई सर्टिफिकेशंस की। बिल्कुल सर, आज के डेट में इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपको compete करना है तो बिना सर्टिफाइड स्वीट सोर्स के आप इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पाएंगे, क्योंकि WTO प्रोविजंस आते हैं। हम अपने टिम्बर प्रोडक्ट्स को, जो फर्नीचर हम बनाते हैं, वो हम बाहर नहीं भेज पाते हैं अगर वो सर्टिफाइड टिम्बर सोर्स से नहीं आता है। तो पूरे कंट्री में केवल उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने अपने फॉरेस्ट एरिया को सर्टिफाई किया है। तो बिना सर्टिफाइड सीड सोर्स के, बिना सर्टिफाइड प्लांटिंग स्टॉक्स के हम अपने प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग, वैल्यूएबल ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये बहुत एक महत्वपूर्ण है। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है, जैसे अभी इंडस्ट्रीज के लोगों ने भी कहा कि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल एंड इट्स सर्टिफिकेशन ये बहुत मैंडेटरी है। क्या देखते हैं, छोटे छोटे चीजें देखते हैं, आपने आपका सीड का सोर्स क्या है, उस सीड के सोर्स में हमने कोई चीज कंटामिनेट तो नहीं किया, हमने कोई पेस्टिसाइड का यूज तो नहीं किया, हमने उसको कहीं मैक्सिमम हार्वेस्टिंग तो नहीं कर लिया। बट शुरू में लगता है कि पता नहीं उसमें बहुत ज्यादा इनपुट हमको देना पड़ेगा, इसलिए हमको दिक्कत है। सर, हम इसमें अपडेट करना चाहते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री एरिया में हम लोगों ने सर्टिफिकेशंस के लिए अपनी संस्था को ऑलरेडी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, और उसके माध्यम से आईसीएफआरए के हमारे 11 इंस्टीट्यूट्स हैं पूरी कंट्री में, उन सब को हो सकता है आने वाले हम 6 महीने या 1 साल के अंदर सर्टिफायर एजेंसी बना पाएंगे। इंडस्ट्रीज ने कोई प्रश्न नहीं किया, अच्छा लगा, क्योंकि इंडस्ट्री अपने जो बॉटलनेक्स है उनको हाईलाइट कर रहे थे। अभी भी हम एक बार दोबारा रिपीट करेंगे कि हमको स्टैटिस्टिक्स चाहिए कि आपको किस प्रजाति का फ्लावर चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, बार्क चाहिए, स्टेम चाहिए। वो क्वांटिफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे। उदाहरण दिया बालकृष्ण जी ने, उन्होंने कहा अर्जुन के छाल हमको नहीं मिलते हैं। नेचुरली अर्जुन के छाल नहीं मिलेंगे, अगर किसी का हम डिबार्किंग कर देंगे तो वो ट्री सूख जाएगा। इसका मतलब है कि जहां हम अर्जुन के पेड़ों की फेलिंग करते हैं, हम वहां से उनको अर्जुन की छाल सप्लाई कर सकते हैं। ये कोरिलेट हो सकता है प्रोवाइडेड होल डिमांड्स कम टू अस थ्रू एनएमपीवी। यही मुझे कहना था। थैंक यू। थैंक यू सर। टीए शेड्यूल, अपडेटिंग टीए शेड्यूल इज द वे अहेड। भी आपने बहुत अच्छा हमें बताया। फॉरेस्ट से लेके ही हमारे इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी है। सौरभ कुछ पूछना चाहते हैं? सौरभ जी आप। Yes.
safety and quality parameters gets preference over untagged raw material. We have with us Dr. Jailen Shastri ji. Sir has a vast experience from the industry as well as from the government side. And sir, we would request you, what's your take on raw material issues and how traceability of medicinal plants as chain of custody of the raw material is imperative to improve माननीय मंत्री जी दोबारा ज्वाइन हो रहे हैं हमें I'll repeat my question. So, what's your take on raw material, certified raw material, and issue of traceability of medicinal plants? As we understand that chain of custody of the raw material is imperative to improve the overall quality of formulations and the future sustainability of the raw material as well. So, thank you. First of all, I convey my respects to both the ministers, honorable ministers present on this dais, all of the panelists. First of all, I would like to mention, I would like to correct that there is no illegality on any of the raw material since it is licensed. So there is no illegality at the product level, and there is no illegality at the what you call raw material level as per the law of the land, since some TP is given. How is given? Let's not talk about the mechanism. I am receiving from my farm gate process, which is legal. So let us try to put this in right perspective. It is an unorganized segment in legal terminology. So we are living in an unorganized world. We are not living in an illegal world. So there are several impediments for the industry, and there are some practical problems, and that we can discuss later. I would like to, first of all, change two myths which are prevailing by and large. And till last year, I was there at NMBB when I realized, it's an eye-opener for me about my 1.5 year tenure. The statement that 80% of the raw material is coming from the wild is unrealistic when you speak about the volumes. If you are talking about number of species, your statement is correct. If you are talking about the volumes, your statement is incorrect. Out of 100 top species, 58 species, starting from Ashwagandha, your Isabgol, your Shatavari, your Giloi, your Tulsi, your Haldi, okay, all are being cultivated and they have become cash crops. Everything is available. If we close our eyes, then it is a real tough time for all of us. Let us put the positive points of this country, as our Honorable Prime Minister always mentions. Take the positives to the world and correct the negatives within our these kind of roundtables or plenaries. So therefore, I'm vociferously trying to mention this. And there is another myth which is prevailing that National Plant Board could cultivate about 2.52 lakh hectares in 18 and a half years. Again, it's incorrect. It is the amount of area, volume of area, which was subsidized by NMPB. If you really look at the training programs given, each training program has more than 50 to 100 farmers. And when I enumerated, the area totally cultivated through these farmers in the last 21 years is more than 20 lakh hectares. Only you're talking about 2.5 lakh hectares of the subsidy given. These two are different entities. So I'm trying to put the right perspective. Now, the question is, who is certifying this? July 2021, there is a notification from Minister of Ayush, where it is categorically mentioned, since the TA form is being submitted by the industry to the National Medicinal Plant Board, the certificate of cultivation will be issued by the NMPB / SMPB / the officers designated by this NMPB or Ministry of Ayush. So the process is on for this certification of the raw material, which is the source. Why I'm giving all these details? We will be talking about the concept on seed to shelf. The seed is to be certified, and KFRA, fortunately, I could see Chakoji here. The team at KFRA, about 42 species seed bank is there. And with NBPGR Delhi, we have more than 120 medicinal plant germplasm bank. I personally visited.
So roughly your top 150 species germplasm has been documented. So let us extend the cooperation to the next level, that is to just certify. So let us go to these organizations and ask them to certify the your so-called germplasm, your QPM, whatever you want to call it as. So this is simple. Only I am giving the solutions. We can enumerate problems for next a decade, but it will not give 1 rupee extra income for this nation. Now coming to the raw material certification, my previous colleague friend Manish Pandeji is here. We have completed successfully 17 languages and versions of your voluntary certification program. I was requesting, this is a huge voluminous what you call document, which no farmer in this country can use. It is not user-friendly format. It is a industry-friendly format. So we should reduce this format to 2 to 4 pages, where an uneducated farmer can fill it up and can use it. Then only it will be useful. The 70 languages may not be useful. This will be an academic exercise which will help in a PhD or postdoc program, but not to a farmer who is illiterate. Let us reduce this format to 2 pages. And how to do it? As we all know, we never test our bangan, our adrak, our mirchi, our dhania, our jeera, our methi in our kitchen, which we are using every Sorry day. to interrupt you. Actually, somebody are behind this. We are very short time, so Yeah. please conclude. Yeah, 2 minutes. So this certification is required as a fit for purpose. What is that fit for purpose? Test your ash value, water soluble, moisture, water soluble extractive value, alcohol soluble extractive value, and simple 4 to 5 spots on TLC over. With this certification, you will be in a position to complete, and you can complete it in a field or a mobile lab, where the concept is already prevailing with FSSA and all. So there are modalities. You can reach out to all the CMAP institutes or CSR, DBT, DST, and NIST organizations. They are there and very much aware of this. The only connectivity will come from getting associated with people, the real stakeholders who are there on the ground. The JFMCs or the SHGs or your NGOs who are associated. Hardly we could trace 23 serious NGOs who are really working and contributing for medicinal plants. It may be surprising. We searched the entire NGO network, we searched DARPOD portal, and we could shortlist 23 at that last year. And maybe to start with, this 23 is a good number, covering the entire nation. Why don't we start getting the data from them? It may be guesstimate or estimate or a guess. Why don't we start somewhere? And about 20 lakh metric tons of bioresources being used today. And if you look at the cultivation, it is about 16, 17 lakh metric tons. And the spice board, which is using 58 species, all the spices. And even if you take 2020-21 data, about 101 lakh metric tons, which is being used by India, 25% if it is being used by Indian Ayush industry, 25 lakh metric tons of spices we are using. This data is available. Let us put it in perspective with a guesstimate. I think this is not impossible. Let us look at the brighter end and positive end than dropping our shoulders for no good reason. That's all what I wanted to convey. I thank Madam Tanuja Nesariji and the entire team for giving me an opportunity. Thank you. Thank you very much. It is your inputs definitely will be taken care, and industry, pro industry, and also it would be really very important, the suggestions. I think in the similar line, we have the representation from APEDA UK Vadji. Maybe you can also in continuation, so that we can definitely, we have then Kumarji and quickly, if you can throw light, Vadji. Sir, I would like to, we are having US Vassi, General Manager, APEDA.
Sir, with respect to certification, I would like to say, recently NMPB has launched one scheme, voluntary certification scheme for medicinal produce. And this scheme is for certifying the source and the quality, and with respect to the good agriculture practices and collection practices. And we are also having Director Quality Council of India, Manish Das ji here, Manish Pandey ji here. Sir, with respect to that, we would like to integrate this scheme for our certified medicine produce to the organic certification, sir. So, sir, please, sir. Whether we can integrate for organic certification, this is very difficult to answer right now, but I would say that integration of all means starting from farmer FPOs to exporters to importers with intervention of lab. That is very important. As far as export is concerned, we have seen the success in case of grapes, where farmer knows to whom he is selling, exporter knows from whom he is taking, and lab knows what sample they have checked. They keep the sample for long so that the importer, whenever some dispute is there, they give that report of that sample. Plus, importer knows the whole chain. This is very important. So whatever difficulties the medicinal plant will be facing, but this is the right way to go ahead. The grapes example is a very particular example for, say, Nasik area, where a lot of grapes are grown. So this is integration is very much possible. But Apida and other products like turmeric was referred. We do the capacity building of FPO, FPC. We do the BSMs to integrate the backward and forward integration. Then we conduct the international buyer-seller meet. So this is the way we go ahead for export promotion. So this is what I want to say. That's all. Thank you very much. Please give him. It was very crisp, and you have given touched the point also. Now we have Vinita Srivastava, Advisor Health. I think we could not join earlier. Maybe you can. She's there. Phil can. Okay. Then our mentor we have Jitendra Sharma ji, who is heading many committees, still mentoring us. So your comments, sir, then we will definitely like to conclude by our secretary donor. Thank you. Thank you, madam. I would like to share a few actionable points. They especially pertain to our parent ministry, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So we have our colleague Ranjan ji here, and through him, we like to convey this to Honorable Minister Sahab. There are some structural changes that are required to be made for making the whole ecosystem more congenial and more transparent. So the actionable points that I would like to place before you, a small amendment in the Wildlife Act on the lines of the provision in the Wildlife Act to collect snake poison for antidotes, that kind of an amendment to allow based on carrying capacity, say from the zoos in the country, on horns of certain deer species, some common coral species, which Ayurveda needs to prepare very important medicines. Especially they are used for children who face acute lung spasms due to allergies. So today also these medicines are being made, but the raw material collection is not legal. So a kind consideration of this small amendment in the Wildlife Act will go a long way in legalizing the supply chain and also making it more transparent. The second suggestion is on transit rules under the Indian Forest Act. We would urge upon the ministry to do a small amendment in the Indian Forest Act so that for the purpose of issuing national permits or for the purpose of cultivated crops, maybe the rules can be put in place where a national portal can be developed wherein any farmer who cultivates a rare, endangered, threatened, or otherwise forest